In 2025, 2025 में the markets shall not be stable. और मार्केट्स जो हैं वो स्थिर नहीं रहेंगे। 5 जनवरी 2025 को डॉक्टर पॉल दिनकरन के माध्यम से ये भविष्यवाणी किया गया, लेकिन अब Stocks across the board crashed again today. Panic has swept through the markets from Mumbai to Tokyo. In India, the Sensex crashed over 2,200 points. In one day, investors have lost over 13 lakh crore rupees in India. That's around $150 billion. This money has vanished from the Bombay Stock Exchange alone. It triggers what we like to call a circuit breaker, where trading actually is halted across the different indexes. US stocks have lost a record $11 trillion in value. It's the same story across Asia. Tokyo's Nikkei dropped by over 8%. Today, markets in Japan and Taiwan hit the bottom circuit. In Hong Kong, things were equally bad. It suffered its steepest decline since 1997. So trading had to be suspended to stop further panic selling. The nations of the world shall go through much chaos with no leadership to unite all nations. संसार के देश तो बहुत सी गड़बड़ियों में से होकर जाएंगे, क्योंकि कोई भी देश इस काबिल नहीं होगा कि सभी देशों को एक साथ में जोड़ कर रखें। Certainly adds to the question of uncertainty that has whirled the markets and political leaders around the world. The uncertainty that keeps persisting, right? We've already had layoffs at factories in different sectors. Each nation will be made to fend for itself. हर एक देश जो है वो तो केवल अपनी ही रक्षा करना चाहेगा, अपना ही सोचते चला जाएगा। Nation shall not know which nation to follow or which group of nations to follow. और देश नहीं जानेंगे कि किस देश के पीछे चले या किस देश के समूह के पीछे, उस ग्रुप के पीछे चलते चले जाएं। These implications have been reflected in the reaction that we have seen in global markets in recent days. The global financial systems are shaking. The world economy is reeling under immense pressure. The world now braces for what happens next. Finally, और फिर अंत में the Lord says, प्रभु ये कहते हैं, My spiritual reign of blessing shall surely be experienced by all who call on my name. हर एक व्यक्ति जो मेरे नाम को पुकारता है, उसके ऊपर मेरी आत्मिक बारिश का वो अनुभव कर पाएंगे, निश्चय वो इसे जानेंगे। 2025, 2025 the year of spiritual blessing rain. ये तो आत्मिक आशीष की बारिश का वर्ष है। हाँ, अब पहले से कहीं ज्यादा आइए हम प्रार्थना में एक साथ आएं और ईश्वर की दया, बुद्धि और सांत्वना की तलाश करें, ताकि हम इन अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण समय में मार्गदर्शन पा सकें।